What is the message that you would like to give? Let's start with you, Aditya. Like, for mental health, for everyone who's dealing with anxiety, depression. I would just like to say that if somebody is suffering from depression or any hypertension or any kind of a problem, there is no harm in consulting a specialist, and there is no stigma attached to it. मतलब मैं तो क्यूबा में फायर हो गया, माइन में लोग मर गए, मैं देख के न्यूज़ मुझे तो रोना आ जाता है. आई एम लाइक वन ऑफ दोज, एंड पीपल इन माई फैमिली से तो हर चीज़ पे रो क्या पड़ता है. Okay, so today we have the very iconic Raj and Aditya with us, very, very good friends and very, very successful actors. Been part of the very amazing Lagaan movie, which we all remember, and I think will be remembered for generations to come. And very iconic role of Kachra and very iconic role of Ismail. Yes. Vice captain. So Kachra और Ismail आज हमारे साथ है, और हम आज कोई भी क्लोथ्स, कार्स, मूवीज, बजट, पैसे, इस सब की बात करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए. वी हैव कम हियर to discuss a very interesting, a very intriguing topic, which is the topic of mental health. And हम क्या message ये देना चाहते हैं, you know, these are people we have always seen on screen, and now we get to know them up close and personal. We get to know about the dark side, not the bright side always. Life is not always bright. Yeah. तो कुछ issues, कुछ struggles हम आपसे जानना चाहेंगे. So are you ready? Yeah, totally. Yes. तो हम राज से स्टार्ट करेंगे. I want to know what is Raj behind the camera. Like on screen we know you. Now what are you behind? What kind of a person are you? ओफ, ये तो आपने बहुत विशाल वास्ट सवाल पूछ लिया, बिकॉज वी आर ऑल मेड अप ऑफ सो मेनी पार्ट्स. बीइंग एन एक्टर इज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दिस इज माई वर्क, दिस इज माई पैशन, दिस इज माई लव. But why did I come to become an actor, and what is it to be an artist? What is it to lead a life which is different from other people? So much name and fame and all those cameras on you. Name and fame, और सबकी आंखें गड़ी रहती हैं आपके ऊपर, और आप छोटी छोटी चीज़ करते हैं, वो सबकी निगाह में आता है, और सब फिर उस पर टिप्पणी देते हैं, उस पर बात करते हैं. तो जब उस तरह का एक माहौल होता है, लकीली वो माहौल जो है, ये जो बड़े 20-25 लोग हैं, इनको ज़्यादा छूता है. ये जो बच्चन साहब हैं, जो आमिर हैं, जो शाहरुख हैं, जो अक्षय हैं, ये जो रियली द लीडर्स, द बिग 20 बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे आर द वंस हुज लाइव्स आर एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली. इट्स नॉट कि आदित्य और मेरे लाइफ में, हमारे जीवन में, आर्टिस्टिक जीवन में या पूरी लाइफ में हम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, हम लोग को भी होती हैं, बट आवर करियर्स आर नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वन फिल्म. उन लोग का क्या है कि बिकॉज दे प्ले द लीडिंग पार्ट्स इन द फिल्म, It's a make or break. It's a make or break situation, and sometimes आप दुखी इसलिए हो जाते हैं कि आपने कोई बहुत अच्छी फिल्म की, बड़े दिल से काम किया, और वो रत्ती भर भी चली नहीं, वो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गई. तो वो भी एक तरह का पब्लिक नॉट लाइकिंग इट, द पीपल दैट यू मेक समथिंग इतने प्यार से, लगन से, लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आपके दिल पे तो अच्छी नहीं बीतती है. So handling rejection is a big part of your career, I think, क्योंकि हर मूवी तो आपके सक्सेसफुल नहीं रहेगी. There will be some failures. ये आपने What about you? What about बहुत अच्छी. I would like to say that I was actually quite lucky that my mother Meera Lakhia was an art director. Yeah. So it was. So you saw that. So I had seen that life, and I had seen my mom work and my brother work. So it was. There was no stigma attached to me that I'm joining the film industry. Whereas during the 80s, there were not many boys or girls going to Bombay to work as a actor, because it was not the done thing that time. And I still remember before, means
before Lagaan came out 12 years after I was in Bombay. So I was always getting, Wow. yeah. So I was always getting that, you know, thing Chota role. from the family. Okay, what are you doing there in Bombay? Come, itna So business 12 hai yahan years you pe. were in Mumbai, Yeah. that struggle. Of course, we were doing some roles, but then I kept working. this was the biggest break, like but Lagaan was the big break. I had done big films before Lagaan. Jojita Bhai Sikandar, Kabhi Yes, Kabhi yes, Na, yes, Om yes. Darvadar, Rihai. But Lagaan was something else. And Lagaan once was Lagaan massive came scale, out, massive. everybody kept Made what, around 50 crores odd net. Yeah, which at that point wasn't a huge amount of money. हमारे फिल्म के साथ उसी दिन गदर भी रिलीज हुई थी, गदर 1, and गदर 1 made a lot of money. huge. And because of primarily one main reason was कि हमारी length जो थी, that gave us only 3 shows a day, whereas a normal movie gets the revenue from 5 shows a day. तो हमारे रोज के 2 शो तो यूं ही कट गए. तो You know, when I listen to both of you, I think both of you, I come down to one point that, you know, this time of handling rejections for a really, really long time, and that belief you kept in yourself कि नहीं, आज reject हो रहा है, कल कुछ होएगा, ऐसे करके आप लोगों ने सालों निकाले. So what was inside you which made you do that? For me, I guess it's the love of cinema, the passion to act and But to be in इतना the patience, industry. Aditya, so much patience. But the thing is, you know, there was rejection. and there is this uncertainty. both. कि पता नहीं होगा नहीं होगा. In fact, after Kabhi Haan Kabhi Na, I had a 5-year gap as an actor. Right. I didn't act for 5 years, not because I didn't want to act, but because I wasn't getting work. But I started working as an assistant director, which I also enjoyed and which was very good. So what I usually tell youngsters who go to struggle in Bombay to become actors, I tell them that don't give up, keep working in the industry. Yeah. If you don't get work as an actor, it doesn't mean that you're not part of the industry. You have to do something else in the industry. I think that we always see you actors as very glamorous people, but I think you guys are filled with immense patience. Immense patience. I mean, Immense patience is patience another and name so for much being an determined. actor. Patience is another name for being an actor. Patience is your middle name. Because, like he was mentioning, rejection is something, in fact, I'd like to tell all young people who want to become actors Please. that you have to know how to handle rejection. It's going to be part of your everyday life. You know, Raj, this is not about only actors. This is for everyone. This is for everyone. आज मैं फैक्ट्री चलाती हूँ, उसमें भी कितनी बार हमको रिजेक्शन मिलता है, ये होता है. I think in total, look at girls on social media today, यार, they are posing only for that a little bit of A little bit. A कहीं little से कोई bit. praise मिल जाए, you know. Yeah. So I think the it's big lesson is to handle rejection. I think that's the big lesson. It's a big one, especially when it's part of your daily life. कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी as an actor who is not a successful actor but a new actor starting out, आप शुरू के कई साल तो केवल अच्छे कपड़े पहन के अच्छे जूते मोजे पहन के आप जाते हो, अंदर से People are flocking around अंदर you, से autograph, ये. नहीं, अंदर से आप damaged हो, but you never want to show it because you're an actor and everybody is looking at your face. You go to a restaurant and how you're you eating, need to not everybody is look looking bogged at down, how. you need to have your manners you in have place. to put on. I think you have to act more in real life. Wow, that's something to You have to act take more home in with real me. life to give You the act more impression in real कि life because- everything is must with me. देखो अगर आप एक्टर So हैं that exterior aura, which is not true, and internally you Which might is- not be so good as you're portraying yourself to be. See, the thing is that it's not that. See, as an actor, I was always satisfied with the work that I'd done. I may not have been very happy with my director or finally film कैसी बन के आई, लेकिन हमारी तो ये क्या बोलना चाहिए, हर वक्त यही कोशिश होती है कि भाई हम अपना काम मज़े से करें, बिकॉज हमारे फील्ड इतना मज़ेदार फील्ड है, एक्टिंग का जो पूरा फील्ड है
वो इतना मजेदार a lot फील्ड of है. fun. It's So a you're lot of basically fun. enjoying the process You enjoy and enjoying not the thinking process. about the result. Exactly. Right? आप तो धोनी के शब्द बोल रहे हैं that you know when I'm batting I'm only thinking you know कि I'm not thinking कि क्या होगा. अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ फिल्में मैंने की है बच्चन साहब के साथ, 1-1.5 फिल्म मैंने शाहरुख खान के साथ की है, मैंने कुछ आमिर के साथ काम किया है. और उन दिनों में जब हम काम कर रहे होते हैं हमको लगता है बच्चन साहब हमारे ख़ास दोस्त हैं, बच्चन साहब हमें गले मिलते हैं. आमिर तो खैर एक अलग रिश्ता है हमारा, लेकिन शाहरुख के साथ भी हम लोग खूब गले वले मिलते हैं. नाउ इफ़ यू डोंट हैव योर सैनिटी एंड योर बैलेंस, आप लुढ़क सकते हैं. बिकॉज ये काम चलेगा आपका 1.5 महीना, उसके बाद फिर 11 साल तक ना बच्चन साहब से मुलाकात होगी ना शाहरुख से. लेकिन उस 1.5 महीने में आप पूरी दुनिया को ये दिखाते हो कि भाई हमारा. मेरे So I am coming to 2 points. रिजेक्शन हैंडल करना वो आपने बोला कि यू नो, बट सक्सेस हैंडल करना वो भी एक जिसे बोलते हैं ना कि सक्सेस को सर पे चढ़ने मत दो और रिजेक्शन को दिल में बैठने मत दो, वैसी बात. वो खास करके लिए आई थिंक फॉर एक्टर्स एट माय लेवल हु आर नॉट ए, उन लोगों के लिए तो ये आपने खास बहुत ही हीलिंग की बात कही है, बहुत सही बात कही है कि भाई ये याद रखो कि रिजेक्शन होगा, ये याद रखो कि ये बड़े गुड्डा गुड़ियों के साथ आपको भी मौका मिलेगा डॉल्स हाउस खेलने का, लेकिन फिर उनकी अलग जिंदगी है, आपकी अलग जिंदगी है. आप इसमें बह ना जाए और आप इस चीज को इफ यू डोंट हैंडल इट वेल से आप और ज्यादा बाद में यू कैन गेट डिप्रेसिव, यू कैन गेट. बिल्कुल. हैव यू टू एवर, if I'm not, I don't want to interfere too much, but then have you two ever felt a sense of depression, or you felt कि we are at our lowest, इससे नीचे तो क्या जाएंगे? Of course. Can you talk about it? Would you like to talk about it? Sure. 100%. I mean, I would talk about it in a different way. Maybe it's not connected to the film industry. I had been in Bombay since 87, 88, and in 2012, my brother died. Ismail Kachra, he was elder to me, friend of, he's also a friend of Raj. And at that time I was at my peak of my career because I was doing 2 shows, Agle Janam Mohe Bityai Ki Jo, Choti Bahu. I was like right up there. You were there. Yeah, and I then was this totally sudden, there. very personal loss of a loved one. Financially I was totally up there. Yeah, flying high. Totally, I was flying high. But I was grounded. You need to remain grounded as a person. That's the thing, no? But I was flying high. And after my brother expired in Ahmedabad, I came back, and then my father had an attack and he went into dialysis. So my father both his kidney failed and he went through dialysis for 5 years. I had to shift bag and baggage after staying around 25 to 30 years in Bombay. I had to give up Bombay. So you sacrificed that. And you prioritized your family. And I prioritized, So you chose love over money. That's what I could say. Yeah, and I just had to be here because once my brother wasn't here, I had to just. So from 2012 to probably 18, I didn't act or do anything as far as the industry. And that was not because you're not getting work. That was because of personal reasons. Correct. So that thing of कि मैं कर सकता हूँ पर मैं नहीं करना चाहता because I choose my. How important do you think relationships are in a person's life? But I came back. You did. You did, and so well. See, relationships are the key to human life, which we feel. And like your parents, your spouse, your children. I think the closer one, maybe your friends. your close relatives. You know, that's what life is all about. If you can balance your work and your family, then that's the most perfect balance there is. Is that really possible? But वो कहना बहुत आसान है, वो करना बहुत मुश्किल है. Is it really possible to ever balance a successful career and a happy family together? Well, I think it's very, very difficult. Personally, I would say that it's very difficult because it requires not just you, but it requires other people also in the equation to be okay. India है ना, सब शामिल हो जाते हैं. सब शामिल हो जाते हैं. हमारे परिवार शामिल होते हैं. Because like if you see all the big stars, they are married also within the industry. Yeah, a lot of them. Yeah, most of them. Like see Ranveer or Ranbir or Mr. Bachchan or whoever. So they all married to
working people in the industry itself. They are making it work. So Some work, they're some making it work don't and they maybe. understand the business. So they know, okay, my husband or my wife is going to go for a month or so in Switzerland and shoot and come back. So probably somebody from outside the industry may not understand that. Yeah. Like when I used to be married, I'm divorced now and for many years, but when I used to be married, I used to tell my ex-wife, I said, hats off to you. Look at me, you know, an actor's job is a bit that I've come today to do a new assignment, and the first scene I meet the heroine, and the first scene that we have is an intimate scene where we are in bed. And I used to tell her, ki, yaar, hats off to you. But that's also a very nice realization that you're having. Yeah. You're sensitive to her feeling, that how she must be feeling. Because at least that is there. Yeah, exactly. So some people might not even be sensitive to that. That is No, you something. मतलब मैं तो क्यूबा में फायर हो गया, माइन में लोग मर गए, मैं देख के न्यूज़ मुझे तो रोना आ जाता है. I'm like one of those. And people in my family से तो हर चीज़ पे रो क्या पड़ता है. I said, I don't know why I cry, but you know, somebody sitting in Cuba and they're in a mine. I immediately, एक तो क्या है, हमारी क्षमता बहुत ये होती है, immediately we get into the situation. Normal आदमी सुनता है कि हम माइन के अंदर, हम माइन में पहुंच जाते हैं कि अगर मैं इस माइन में हूँ और you know ये हो जाए. He is very. I think that you are kind of very. So it's okay for a boy to cry. It's okay for a boy to be sensitive. What? That's also another message, because usually I see men trying to become very macho and not. हमको फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन Usually मैं girls आपको cry. बताऊं कि हमारी फील्ड में मर्द भी खूब रोते हैं. हाँ. खूब रोते हैं. I think maybe it has to do with being artist, so I don't know what, या कोई बहुत गहरी कोई रंजिश है या पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोग तो खूब रोते हैं. हम लोग तो, मुझे तो याद है बचपन में भी मैं खूब रोता था. फिल्म देख के रोना आ रहा है तो मैं धाड़े मार के रोता था. It's always good to take it out, say rather कि than- अरे यार ये रोता कितना है. I would cry. I still cry. Whenever I get a chance, I like to cry, and that's fine. That's Yeah, totally that's totally okay. fine. That's an emotion. So you know, It's an now emotion. that society is gone, जब हम लड़के को पूछते हैं कि अरे लड़कियों जैसे क्या रो रहा है, हाँ, you know, that's what शुक्र है. we've heard, you know, दादी. मर्द को दर्द नहीं होता. Now it's that was Another the thing I greatest think- falsehood. You know कि मर्द को दर्द नहीं होता. क्या I दर्द know. नहीं It was होना such चाहिए. a नहीं होना चाहिए, falsehood. so दबा के नहीं होना रखना. चाहिए. Yeah. So we talked about dealing with rejection, we talked about dealing with success. That is a part of the professional life. We talked about dealing with personal life, the loss, like you say, or maybe divorce, or you losing your mother, and then balancing it all. And it's too much to juggle sometimes, and it gets on you. But आप लोग के साथ, I feel, especially in your profession, is what happens that when you enter into a movie, you have to really enter into that character. Which is like for you Ismail and for you Kachra. Kachra might be a completely different person from what you are in real life. Yeah. Does that kind of mentally overburden you and you feel कि यार ये तो मैं कहाँ मुझे अभी, you know, so maybe someday you are very sad but you have to act happy. Kachra Or has someday you are happy and Let you him have to act answer, sad. then I'll answer. Yeah. Let him probably answer. actually Kachra has overburdened me. Yes, It has, it does. because frankly I love playing Kachra. It's the character, and the movie Lagaan made my life, and I'm so proud of it. And I'm proud of the character Kachra, but I've always known you as such a confident person, but then suddenly you have to act like you feel like completely not no, confident. that is also okay. But the character itself has become a very iconic character, and there is no way I can get out of it. So you, because it must be mentally very. No matter what I do, even if I do 10 films with Shah Rukh or Amir or Amitabh Bachchan or whoever, and I get the best roles in those films, but I will be known as Kachra. Whereas I think that when we're given characters which are completely somewhere else, as an actor you love it. Because it gives you the chance to explore. It gives you a chance Give you a to chance explore. to kind of be someone else. अपने अंदर it gives you a chance to be someone else, and if that is what an actor is. An actor is a person who likes to be somebody else professionally. You know, तो मैं तो बड़ा मजाक से बोलता हूँ लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं
हमारी नौकरी ऐसी कि हम जाके फिर कोई और चीज पैदा करते और हम वो जीते. Would you act if you're not paid? Would you act for free? I would act You for would. sure. What about you? I've acted so many times. We have many times. अभी तो नहीं कर रहा. नहीं, क्या है कि अभी भी हम लोग like he has produced a Gujarati film. Now he's become a producer. Yeah. Now when he's become a producer, he realizes कि कितनी मुश्किल से पैसा आता है. तो जब मुश्किल से पैसा आता है तो फिर ये बोलेगा यार राज भाई तू 5 पैसे ले ले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पैसा आया है. क्योंकि अब ये प्रोड्यूसर बन गए, अब इनको पूरा इल्म है कि पैसा कहाँ से आता है. और अगर हम छोटी फिल्म जब बनाते हैं इतना कम पैसा होता है कि हमें श्रद्धा को बोलना ही पड़ेगा, श्रद्धा आप स्टार है लेकिन हमसे पैसे आप मतलब जो हम देंगे वो ले लीजिए प्लीज़. हमें प्लीज़ बोलना पड़ता है. अगर ये आएंगे मेरे पास भी, ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, लेकिन ये एक प्लीज तो छोड़ देगा बिकॉज इसको मालूम है कि मैं आई एम नॉट पेइंग हिम व्हाट इज हिज रेट और व्हाट ही डिजर्व्स. आई एम पेइंग हिम. Does that ever bother you guys? The way you guys are like rated, कि इसका क्या रेट चल रहा है, इसका क्या रेट? Do you feel like being? Well, I don't know. It doesn't really affect me because And you know, then our sometimes your rates rate keep might changing. go up, sometimes it might But go that's down. what You feel happens. objectified. It's also film to Yeah. film, production to production. Yeah. How big is the production? How small is the production? So you work like Because accordingly. these are also real problems. जो बजट है वो भी तो देखिए Finances एक is, इशू I है. think the problem with everyone. Ultimately, every business and everything comes down to. अभी हम कुछ फिल्में करते हैं उसके अंदर वो ये भी बोलेंगे सर हम लोग छोटी जगह जा रहे हैं. अब आप समझिए छोटी जगह में आपको मैरियट नहीं मिलेगा, आपको बड़ा होटल नहीं मिलेगा, तो सर प्लीज़. तो अभी क्या है हमारा बैकग्राउंड थिएटर से है. थिएटर में ये होता है कि आप ज़मीन पे भी सो रहे हो, अखबार बिछा के भी सो रहे हो, अखबार ऊपर लेके भी ठंड से कर रहे हो, बसों में चल रहे हो. एक बस जिसमें 32 लोग बैठने चाहिए उसमें कुछ 45 बैठे हुए हैं, रात को भी ट्रैवल हो रहा है. स्पेशली जब आपने ये टाइम भी देखा है जब आप एक ऐसे हीरो थे कि आप जब चल रहे थे तो पीपल आर जस्ट बिल्कुल टॉकिंग बिल्कुल अराउंड. बिल्कुल. सो you know this is something to really But that is learn something which happens to us all the time. all the time. मतलब हम आई वॉज हियर रिसेंटली, हम दोनों रिक्शा में, वो रिक्शा वाला मतलब इतना परेशान हो ये गया कौन है? ये नहीं थोड़ा कौन दिखा दिखा लग रहा है, लेकिन कौन समझ हमारे नहीं आ रहा. साथ मतलब रिक्शा में क्यों आ गए? अरे भाई हम लोग भी इंसान है यार, छोड़ दो हमको. People get तो ऐसे surprised चलाते रहा that we are गाड़ी पूरे traveling in a टाइम. rickshaw because अरे आप दोनों रिक्शा में Because the whole image आपको तो breaks. Mercedes I'm में होना telling you, चाहिए. Like that. That is the because persona. people idolize you guys. And that is When something. you say कि हमें भी issue होता है mentally, that is the message that I want to give. Like Raj said so brave कि भाई I cry, Yeah. and it's totally fine for guys to cry. You don't need to be macho all the time and No, to no, have this false image, you know, portraying. So I नहीं, think also साथ साथ हम दोनों एक्टर्स लाइक हिम एंड मी वे आर ऑल्सो कॉन्शियसली, हम जब एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो हम जब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं तो हम ये एफर्ट करते कि भाई हम उतने ही नॉर्मल हैं जितने आप हैं, हमारे कोई पर नहीं लगे हुए, हमारी कोई स्पेशल टैलेंट्स नहीं है. हमें ये कहती हैं उल्टा लटक जा, हम उल्टे लटक जाते हैं. वो कहते हैं कि भाई सीधे चल, जरा यूं करके चल, हम यूं करके चलने लगते. कोई कहते हैं इसमें आप वो बने अपाहिज, हम अपाहिज बने. कोई कहता है आप पाकिस्तानी बने, हम पाकिस्तानी बने. आई रिमेंबर अ फिल्म, आई वाज इन उत्तराखंड, मैं पाकिस्तानी का सपोर्टर था उसमें और रात को मैं चला लॉन्ग लिव पाकिस्तान. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये हो मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग लिव पाकिस्तान. बट जब हम बोलते हैं लॉन्ग लिव पाकिस्तान तो हम सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते, वो भी दिल से निकलता है. क्योंकि आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए स्टेज If ना I'm स्क्रीन playing, पे. if I'm playing So that is somebody what who's is very- not from my religion, I will make sure कि उस रिलीजन के लोग जब देखें मुझे तो बोले ये Connect अपना ही करें, बच्चा उनके साथ है, ये अपना ही connect बच्चा है. I feel that. And Fine. you know in India how can we say कि भाई हिंदू मुसलमान हम लोग मतलब ये तो लैंड ही ऐसा है कि हम यहाँ बचपन तो से सब देखते I know, आए हैं. it's- यहाँ तो सब है भाई, सब- सब लोग हैं. Absolutely. तो एज एन एक्टर हमें तो ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें इतनी ह्यूमैनिटी प्ले करने के लिए मिलता है. हमें तो बड़ा मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है. मुझे हमेशा ऐसा लगता है दैट यू नो जितने मेंटल हेल्थ इश्यूज जो रिच में हो रहे हैं पुअर में नहीं हो रहे. यू नेवर सी योर मेड और योर ड्राइवर गेटिंग डिप्रेस्ड.
I think जितना पैसा बढ़ता जा रहा है, the more money we are having, the more depressed we are getting, the more mental health issues. Why do you think that is? Or the more glamour in your case? जितने glamour world में आप जा रहे हैं, money should be making you happier and your life easier. Yeah, but You're able that to is the afford power. things and everything. Then why That are is you the getting power more of depressed money. when you have that? That is the power of What's money. your take on that? I feel that with more money, there's a lot of pressure also to maintain that kind of a lifestyle, you know, and it is not, you know, I frankly, I see, I mean, forget the film industry, I see a lot of friends of mine, whether in Bombay, Ahmedabad, Delhi or something, they are always, they are driving BMWs or Mercedes or whatever, they are having 2 lakh ka phone or whatever, but they are always under pressure कि you have to ये EMI अभी जाना चाहिए. So you are under pressure to, you know, To maintain to that, and maintain you're under that. fear of losing that. yeah. Fear of losing that. I think वही It's- है it- कि जिसका it's लाइफ not में easy. स्टेक जितना ज़्यादा है, not it's easy. like So the more luxury you surround yourself with, the more you become slaves Yes. of that luxury. exactly. Like just a few days ago, I was just talking. My phone got spoiled, and I was tensed. Yeah, you told me. I was tensed. For 4 days, I didn't have a phone. It's difficult. All my bills, all my everything, my contacts, my Absolutely data, everything. It's a headache. Yeah. Everything is on there. everything is on there. I hadn't. Become In fact, slaves. for today's interview, I hadn't. I was not in touch with you. I was not in touch with him. I was Yeah. not in touch with Biju. Yeah. I didn't know कि are they calling me what where क्या is है, he? श्रद्धा Has डंडा he- लेके आएगी, has he चलो। Why has he switched off his phone? Yes. As soon yes, as I yes, yes, absolutely यार. मेरे को लगा आदित्य कहाँ चले गए? फोन तो भैया आजकल बहुत एलिवेटेड स्टेटस है. and we are a generation that we नहीं, have हमारा तो कम है. we have lived without हमारा तो कम है. हमारा तो हमारा कम तो कम है. है. We have lived without phone. without the phone. Without- But now we can't even imagine. Not Now we even a can't single day. imagine. Now phone has come and just taken over our lives, and I feel very sad because ये पहले टेलीविजन आया, फिर ये फोन आया. और ये अब कर क्या robots रहा है आएंगे कि अब. ये इंसानों को इंसानों से अलग कर रहा है. और फोन तो ऐसी कमाल की चीज़ है, और वो कान में पड़े आते हैं और आपको लगता है मेरी दुनिया मुकम्मल है. मुझे ना मम्मा चाहिए, ना पापा चाहिए, ना किसी का ज्ञान चाहिए, ना कुछ चाहिए. मेरा म्यूजिक चल रहा है, I'm happy. I'm I'm another happy. one. मेरी जिंदगी Completely कंप्लीट है. disconnected. कंप्लीट है मेरी जिंदगी. और अब हमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज गाड़ी चला रहे हैं और आप हॉर्न मार रहे हो बिकॉज उसके तो कान में ये पड़ा है, वो तो अपने हंसते चल रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है कि भाई पीछे इतने जोर से हॉर्न वो बज रहा किसी है के यार. साथ बात कर रहा है. वो किसी के साथ बात कर रहा है. सब लोग नीचे देख के चल रहे हैं, सब लोग यूं देख के चल. अरे भाई क्या हो क्या रहा है? यू नो, कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर वी लूजिंग इट. I go to the park just yesterday in the evening. I met this really senior gentleman who's a surgeon. मैं 1965 से सर्जन हूँ. अरे मैंने कहा सर आपके चरण का है. तो मैंने कहा एक बात बताइए, मैं आपसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन की है. हम लोग पार्क में आते हैं, जिस दिन मैं पार्क में आके नीचे देखता हूँ ना, तो मैं अपनी दुनिया में घुस जाता हूँ, और जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मैं इस दुनिया का हो जाता हूँ. इट्स सच अ सिंपल थिंग. आपने नीचे देखा, इट गिव्स यू द लाइसेंस कि अब मैं अपने उधेड़ बुन में हूँ, मेरे इतने प्रॉब्लम चल रहे लाइफ में. और जब मैं यूँ देखता हूँ तो ये सब चीज़ें भूल जाता हूँ, और मैं चिड़िया देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, और घास Because देख रहा हूँ. this is the sense organ, na? And I'm saying that why you're can't experiencing we- life through your sense organs. basically. So I was telling the senior gentleman, the surgeon, I said, sir, ये किसी तरह मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई ऊपर देख के चलो, नीचे देख के मत चलो. नीचे देख के ये चलोगे मोबाइल में तो देख के मत चलो. और मोबाइल आई मीन आई डोंट नो. हम लोग बहुत, मुझे ऐसा लगता है जैसे दिशाहीन एक लफ्ज़ है, डायरेक्शनलेस. बहुत डायरेक्शनलेस चल रहा है मामला. हमें मालूम नहीं है कि इतने फोर्सेस है, कोई हमें यहाँ खींच रहा है, कोई चीज़ यहाँ खींच रही है, मोबाइल यहाँ खींच रहा है. Distractions हो गए. Mind is इतने not concentrated on a distractions particular. हैं, इतने distractions हैं. What do you इसके feel about बीच में what do you feel about alcoholism and drugs? And now I think it's become देखिए, so common among मुझे the ऐसा लगता है youngsters. कि Especially I बड़े-बड़े- think it's so much in your industry. I feel I don't know. You tell everyone because हम लोग आपको लगता है, हम लोग लगता है कि बॉलीवुड में तो सभी ड्रग्स लेते होंगे. नहीं We don't know. नहीं, No, that is the ऐसा common. तो ऐसा तो that is the बिल्कुल common- नहीं है. मैं तो बोलता हूँ ऐसा तो एक्चुअली है ही नहीं है, लेकिन आई थिंक it exists in all the industries. In all the It's industries. not, All industries. but because the film industry is
More about glamour, Visible, more about and glamour. All our lives are scrutinized. Yeah. So and the weight loss, and the probably the paparazzi pressure of remaining that perfect and figure. the media and paparazzi are always looking for. और देखिए something or the दूसरी other. बात ये भी है, बॉलीवुड ने कभी ये नहीं बोला कि हम मोरालिटी के गुरु हैं। पूरी दुनिया जानती कि पिछले 100 साल से अरे ये फिल्मी लोग खूब पार्टी करते हैं। अब पार्टी में हम लोग चाय और पानी तो नहीं पिएंगे ना, माफ करिए, कि शरबत is बना true. दे। कोई The only शरबत thing तो is नहीं that पिएंगे। ऐसा लगता है corporate कि की party getting होगी। addicted, But addiction out of grief. If there's a corporate party or if there's even Absolutely. politicians and all, they all drink. Everybody is drinking Everybody- and that's so drinking socially is one thing, Yeah. but getting depressed and taking it as a support is another thing. See, that is an aspect where, again, because the ratio of success is so small, so minuscule, कि definitely if you're going to be an actor or in our business, there definitely would be more rejection, there would be more failure. You have to know how to handle it, and you could देखिए एक्टर होने में क्या, अभी जैसे हमने बोला कि हम रिक्शा में चलते तो रिक्शा वाला परेशान हो जाता है, बोलता है अरे सर आप रिक्शा में क्या कर रहे हैं। अभी पब्लिक एक्सपेक्ट ही नहीं करती है कि हम कुछ नॉर्मल चीज़ें करें, और अगर मामला गड़बड़ाता है तो हमें लगता है हमारी पोजीशन ऐसी है कि अब मैं अपनी वीकनेस कैसे जाहिर कर दूं। ये लोग तो सोच रहे हैं कि भाई मैं यहाँ हूँ, ये तो पूजा कर रहे हैं, अब मैं बता दूं कि यार एक्चुअली मेरे दिल में बड़ी कालक है और मैं बड़ा अजीब आदमी हूँ रात को 8 बजे के बाद। ये तो मैं बोलूँगा नहीं किसी को, लेकिन ये हूँ, ये मेरा So you सत्य है। resort to these means कि आपको थोड़ा temporary एक सुकून मिल जाए। टेम्परेरी सुकून मिल जाए। एंड देखिए you should not get dependent on it. बट एडी But there are people who are. एक लॉजिक ये भी है कि मैं दिन में मेहनत से काम करता हूँ और मैं शाम को मेहनत से पार्टी करता हूँ। एक ये हाँ, भी work hard, party hard. एक ये भी एक विचार है But समाज you think में। that drugs or too much alcoholism is an issue? Not in your industry, generally. I also. feel that of course it's there. Of course it's there. And why do you think when that it's I was rising? younger, people Why were do you doing think this drugs. is rising? Like क्यों बढ़ रहा है ये? भाई राइजिंग के तो कई कारण हो सकते हैं। बेसिकली डिससैटिस्फैक्शन, एंड इफ यू आर अ यंग पर्सन देन मे बी पीयर प्रेशर, उन लोग के लिए पीयर प्रेशर। और इफ यू आर नॉट अ यंग पर्सन बट यू आर स्लाइटली ओल्डर पर्सन देन लाइफ इज सो डिफिकल्ट दैट इट इज वन ऑफ द थिंग्स। मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों ने बोला है कि जिंदगी ऐसे जीना कि बिल्कुल साफ सुथरी, वो निहायत ही मुश्किल है, वो निहायत ही मुश्किल है। और मॉडर्न टाइम्स में तो मुझे लगता है और भी मुश्किल है। 100 साल पहले तो लोग जी रहे थे। 100 साल पहले आई थिंक ज़्यादा लोग थे जो ना शराब पीते थे, ना ड्रग्स करते थे, ना आड़ी टेढ़ी बातें करते थे। ज़्यादा लोग थे। अब वो बहुत कम संख्या है ऐसे लोग। बल्कि मैं तो मिलना ही चकित हो जाता मुश्किल हूँ व्हेन आई मीट समबडी हु इज अ नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर। मैं You ask तो them, ऐसे are you देखते okay? रहता हूँ। What's like what's नहीं, मैं wrong उनको with you? देखता हूँ कि भाई मतलब बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन आप जीते कैसे अपनी जिंदगी? ये Pressure को खैर, कैसे handle करते हो? You need that There's a to very dear friend of ours who's a famous actor also. His name is Mr. Deepak Tijori. अरे, He doesn't क्या? drink. He doesn't smoke. क्या बात है? He is a vegetarian वाह वाह and he does puja every morning. वाह, You know. course. And he does yoga. या So that नहीं, is हर one तरह way of के- releasing because then that's a lifestyle to maintain. I think ये सब चीजें आप नहीं करते हो तो प्रेशर में vulnerable moments पे you might get. We had the whole movie Sanju. You know it was Yeah. so Yeah. कितना संजय दत्त एंड सी देयर इज नो डिनाइंग दैट जितने नशे हैं उनमें ये कैपेसिटी है कि आपको आपके प्रेजेंट से दूर ले जाए। और उसीलिए हम नशा करते हैं कि हमारे प्रेजेंट से ये बड़ा मुश्किल हो रहा है जीवन, इसको झेलना, इसको बैलेंस तरीके से झेलना। तो नशे के सपोर्ट के साथ में लगता है आहा, दुनिया तो रंगीन है, दुनिया हरी भरी है। But So then it's a how that temporary measure. depletes you physically भी आपको वो deplete करता है. Have you ever been through that kind of a struggle? You feel कि यार अब इसमें से निकलना पड़ेगा. I have to control this. Definitely you go through periods where where if for example if you haven't worked for a long while and you're slightly down and out, then definitely the tendency is to reach out for the nashas. I will say that very plainly. The tendency is to reach out for the nasha because ये अंदर गई या
ये अंदर गया तो एक सुकून आ जाएगा। तो वो सुकून तो जो नशा नहीं करता है, हाँ, वो देखिए सुकून इज व्हाट वी आर ऑल लुकिंग फॉर अल्टीमेटली। हर इंसान जो है वो सुकून ही ढूंढ रहा है। अब वो सुकून पाने के रास्ते अलग अलग हैं। कुछ रास्ते हैं वो पाक रास्ते हैं और कुछ रास्ते हैं वो सो कॉल्ड नापाक रास्ते हैं, लेकिन वो भी रास्ते हैं और उनको भी हजारों साल हो गए। आई थिंक दारू पीते पीते भी इंसान को हजारों साल हो गए होंगे, चरस गांजा पीते पीते भी हजारों साल हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ आज के समाज में कुछ ये नई चीज़ आई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी ये प्रचलित जैसे हर जगह हो रहा है। आई थिंक पर फिर भी आप लोग सरवाइव कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं और हैप्पीली कर रहे हैं। आई थिंक उसका मेन कारण ये है कि जो हमारी नौकरी है ना, वो हमको बहुत हैप्पी कर देती है। मैं आपको बताऊं, शुरू में find that one sweet spot which you are, you can't fake to be, but वो चीज करो जो आप, जैसे आपने बोला कि मैं फ्री में भी करूंगा। देखिए मैं आपको find that one thing जो आपको, and don't take too much pressure. Don't take too much And pressure. don't take too much. Life is not serious. नहीं, लाइफ इज सीरियस, लेकिन यू डोंट टेक इट सो सीरियस। लाइफ तो सीरियस तो है, और लाइफ अच्छी होगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये भी लाइफ नहीं कह रही है। लाइफ कह रही है मैं प्रॉब्लम्स के साथ आऊँगी, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तो आऊँगी, मैं तो आ रही हूँ। तो लाइफ तो आएगी, और लाइफ में ये कैपेसिटी होती है कि एक क्षण में आपकी ज़िंदगी बदल देता है। वो जब थप्पड़ मारती है लाइफ आपको, और पूरा बदल जाते हैं, पूरा हर चीज़ चेंज हो जाता है, लेकिन अब उससे कोई आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं। वो है सो है। सो आई थिंक व्हाट ही सेड, ये बड़े गुण की बात है कि यार थोड़ा प्रेशर कम लेना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो बहुत है, प्रेशर तो है, लेकिन उसको हम ऐसा कि स्टॉप गिविंग अ डैम कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, देखिए वो एक चीज़ है जो वैसे भी आई थिंक हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ही गहरा और गड़बड़ ट्रैप है, इतना बड़ा ट्रैप है ना ये, कि इसमें आप बिल्कुल उलझ जाएंगे। तो ये जहाँ तक हो सके, you are not never going to satisfy that 100% that criteria. Never going to satisfy. And Raj and Aditya, last question I want to ask you. What do you feel about, जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं जो डिप्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी है, कोई तरह का स्ट्रेस है, स्पेशली जैसे मैं चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ, स्पेशल बच्चों का चलाती हूँ। स्पेशल बच्चे पे सबका ध्यान है, पर स्पेशल बच्चे की मदर के ऊपर क्या बीत रही है, फादर के ऊपर क्या बीत रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। तो मदर माइट बी डिप्रेस्ड, फादर माइट बी स्ट्रगलिंग मोर बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव टू हैव अ स्पेशल चाइल्ड, गेट द ट्रीटमेंट्स डन। तो लोग प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते। Have you ever faced anything in your life जहाँ आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए गए, and you can proudly talk about it and tell people कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, या फिर है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और कोई साइकेट्रिक हेल्प लेना? What do you feel about that? I think there is no harm whatsoever in seeking professional help from psychiatrists, psychologists, or psychoanalysts. There is no harm whatsoever, because it's a part of life. Pressure and tension. I have hypertension. I got hypertension, like I said, in 2012. I didn't realize it. When I started getting headaches, and then my friend Sanjay Shah said, "You better check your pressure," because that's the time my Because that stress manifests physically. Yeah, and then I now I take hypertension medicines. I take blood pressure medicine every morning. So maybe that time I should have gone to a professional, a psychoanalyst or a professional. So you think you would not have to take those medicines? Maybe it would have eased my stress. Exactly. But I got through it. But there are so many famous actors who have come out talking about it. Deepika Padukone, Amir Khan's daughter, has spoken about it. So there's no harm. Yeah, I feel, for example, like when my marriage finished, I was completely down and out, distraught, everything. And in fact, it was my ex-wife who said, maybe you should go to analysis.
And so I started going to analysis, and I must tell you, Shraddha, that Did it the help? benefit of analysis is that I have bounced back to life Because of that professional intervention. because of the professional intervention. देखिए हमारे यहाँ क्या होता है हिंदुस्तान में कि माँ बाप आपको प्यार करते हैं, एक माहौल होता है, सब आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं. वो आपको प्यार के बेसिस पे आपको संभाल रहे हैं वो, लेकिन वो प्रोफेशनल आपको एडवाइस देने की उनमें क्षमता नहीं है. This is a big thing. Seek professional Absolutely. help. I would say that to anybody and everybody who's listening to this interview, that there is no harm. कोई And there's no shame. There's no shame and there's no harm. ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटे इंसान हो जाते हैं या आप ऐसा पागल नहीं हो है जाते कि हैं आप या- कोई पागल हो जाते हैं या क्योंकि आप पागल हैं इसलिए आप जा रहे हैं. मैंने अपने कई सारे दोस्तों को बोला, मैं बोला कि you must go to analysis because the pressures of life, we all are like, we've spoken about this, कि इतने pressures होते हैं उसको handle करना, professionally seeking advice, it's a world it's a different world. And I can say it with full confidence because I've been doing my analysis for many, many years. Not like 1 saal, 2 saal, for many years. And you think that's what keeps you and you afloat pay for and- it, so it's only It's expensive, if it's no? it Yeah, is yeah. expensive. Just like, so now you need to invest in your physical health, you need to also invest in your mental health before it gets too late. Before it gets too late. And I think that investing in mental health is actually not an investment at all. It is not an expenditure. दिमाग ही ठीक नहीं रहेगा तो क्या करोगे यार, बिल्कुल, शरीर का और पैसे का और that करियर is the का, main relationships, engine everything आपके is gone down. अंदर. वो इंजन गड़बड़ाया हुआ है, आप सोच रहे हो चलो मैं टायर चेंज करवा लेता हूँ, ये करवा रहे, नहीं भाई, इंजन गड़बड़ाया हुआ है. अब आपको मिलना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो इंजन ठीक करेंगे आपका, बाँ ठीक करना And that हो, helps. नाक ठीक करना That हो. really helps. That really helps. I'm a well. What You're a should I living say? example of I'm a how living example. I mean, there are many more people, and I wish there should be many more. And I want to say this again and again कि कोई ना तो शर्म होनी चाहिए, ना कोई hesitation होना चाहिए to seek mental health professional की help. ऐसा बोलते हैं कि 10 साल में the mental health will be the biggest industry. It will be. Because it will everyone will be seeking, and that's so good. I feel that's amazing when we get to talk about. When we get to talk In the about West, in the West too, it's a very normal thing. it. In the Very normal. in the West, it's India a में भी normal अब thing. काफी acceptance हो गया है, but still we have families who don't allow. Who बहुत सारे are- taboos हैं, Especially बहुत सारे females, I taboos see they are हैं. in stigma not to seek help. Yeah, I think it's, बिल्कुल so this is one बेबुनियाद lesson है. that आज we के must- ज़माने में बेबुनियाद हैं ये इस तरह के एनीथिंग चेकिंग, बिकॉज आप उससे बेनिफिट करेंगे. आपकी पर्सनालिटी में एक लहर, एक बहार फिर से आ सकती है. जैसे कि कोई होता बीमारी है, I feel. हाँ, एग्जैक्टली. उसको ट्रीट किया आपको आपने कुछ सही ट्यूमर तरीके हुआ, से. निकाल दिया, वैसे आपका कुछ मेंटल हिकअप है that. Absolutely. So this is And one we are all क्या है कि मेंटल इश्यूज इंसानों के साथ शुरू हो जाते हैं जब वो 2-3 महीनों के होते हैं. तब से हमारे मेंटल इश्यूज शुरू हो जाते हैं. हमें माँ का दूध नहीं मिला, हमें वहीं से हमारी टेंशन शुरू हो जाती है कि अच्छा माँ बैड मदर. Childhood trauma is a real thing. Childhood Definitely trauma is a है और real सबको thing. होता है. No parent is perfect. Everybody is learning, I feel. But I feel that that's another thing that personally for me, the fact that हम लोग इतने लाइफ को इतना बाउंसी है लाइफ के बारे में, आई थिंक फॉर मी इट डेफिनेटली कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी हैप्पी चाइल्डहुड. वेरी हैप्पी. Wow. Very happy childhood. मतलब me and my sister we both laugh कि बिल्डिंग गिर जाए. Both of us ऐसे हंसते हम लोग कि बिल्डिंग गिरा दे हम. और we are very easy with human beings, and it comes from our mother and it also comes from Papa. It comes from both of them. Her mother was a tigress. She was tigress, but full of love. She was a tigress, full of love. So we get the love aspect also, but we also get the aspect of कि पूरी दुनिया मेरी है. Sure. पूरी दुनिया मेरी है. And being artists, I think that is one of the planks which makes us an artist. कि ये पूरी दुनिया हमारी है. ऐसा नहीं है कि विलायत के देश हैं, वो गोरे लोग हैं, वो हमसे कुछ फर्क है, नहीं. हम लोग गए थे अमेरिका जब 9/11 हुआ था. हम वहाँ पे और फंस गए थे. उस वक्त अमेरिकन लोग
और जो अमेरिका में लोग रह रहे थे वो बेचारे इतने हिले हुए थे कि पहली दफ़ा हम ब्राउन स्किन के साथ बात करने में कोई झिझक ही नहीं थी उनको, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि अच्छा ये देश झेल रहा है, ये होता है टेररिज्म। पहली दफा हमको लगा कि हम विलायत गए और गोरे जो हैं, बाहर के लोग जो हैं, वो हमसे सेम टेबल पे बैठ के एज इक्वल्स बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी सडनली उनका हृदय गड़बड़ा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम दे ऑल्सो फेल्ट weak, and oh God, this can happen to us. So that made them, I mean, in a way, it made them very vulnerable. And so only then they shared their vulnerability with us. Otherwise, we would always see them as everything is so fine with them. वो पहली दफ़ा हमें लगा कि ये vulnerable, ये लोग भी vulnerable है, ये लोग बेचारे इनकी कमर टूट गई suddenly, एक दिन उठे. So yeah. What is the message that you would like to give? Let's start with you, Aditya. Like, for mental health, for everyone who's dealing with anxiety, depression. I would just like to say that if somebody is suffering from depression or any hypertension or any kind of a problem, there is no harm in consulting a specialist, and there is no stigma attached to it. And if your elders who are slightly old-fashioned, they should be explained by the new generation that this is a very normal thing. It's supposed. कोई शर्म की बात नहीं। कोई शर्म की बात नहीं है। It's fine. तो it's fine. अगर मेरे को sprain हो गया तो I'll go to a orthopedic. If I'm suffering from anxiety or mental depression, I'll go to a psychoanalyst. So there is nothing wrong with it. There's nothing wrong. Why is? Yeah, it's very natural, and it is amongst seeking everybody. help of your friends, family, and even professional if required. Exactly. Should be very normal and casual. Exactly. What is your advice? I would echo his sentiments exactly. और मैंने तो जैसे खुद आपको कहा कि मैं तो खुद analysis I've been going for many years, और and very bravely and openly talking about it. Absolutely, and talking about it and telling all my friends and people that I love, like all of you, that कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। भाई जिंदगी मुश्किल है, ऐसी सरल नहीं है, ऐसी आसान नहीं है, और अगर हमको कहीं लग रहा है कि हमें किसी की सहायता चाहिए तो उसमें कुछ गलत है ही नहीं। ये थोड़ी कि वो आपके जीवन भर आपके पीछे चिपक गई चीज़, नहीं, वो आपको केवल, आपको स्प्रेन था, आपके हाथ में प्रॉब्लम थी, आपका हाथ 1-2 साल में ठीक हो गया। इट्स दैट, Great. Yeah. So lovely talking to you both, and lovely knowing that the people we are idolizing on screen are also Human. going through their ups and downs in life and have their issues mentally, physically, whatever. And it's perfectly normal to seek professional help. It's perfectly normal for boys to cry. It's perfectly normal to be depressed, and please never get yourself in a cocoon. Get out, seek help from friends, family, and professions if required. Yeah. Thank you so much for coming. you. It was Thank you. amazing Thank you. to have you both, and thank you Thank for you. talking so openly. Thank you. Thank you.